So P2 angle properties of circle P2 का इस question है. So the first part is asking us to calculate CED. I'll use a red pen for this one. CED. This is the angle that I need. How will I find this one? 20, and the reason is alternate angles. We are ऐसा नहीं कि दिख रहा था तो है. These are parallel lines forming a Z. So CED is 20 degrees. Is this clear? Easy. लिखते जाओ इसके साथ साथ. This is angle properties of circle. P2 वाली वर्कशीट है, इसका पेज नंबर 1 है. Page number 1. So the next part is CTE. CTE. This angle CDE. How do I calculate this angle CDE? Okay, so CDE, we can find this by looking at the figure CDEB. Is that a cyclic quadrilateral? So CDE plus 75 should be equal to 180. They are opposite angles of cyclic quadrilateral. So CD plus 75 is equal to 180. 180 से minus करो. What is CD? 105. The reason is opposite angles of a cyclic quadrilateral. Is this clear? Okay. What about ECD? ECD. ये पूरा angle है. Let's have a look at triangle ECD. You know the angle E is 20. You know D is 105. Can you find the angle C? ये छोटा वाला, this part of C, that is a part of triangle ECD. 20 and 105 को add करो and then subtract it from 180. ये angle D is 105. Angle E is 20. This is 135. Subtracted from 180. What do you get? 65. So this part, ये छोटा सा part is 65. So पूरा angle ECD, sorry ECD निकालना था, पूरा नहीं निकालना था, ECD ही निकालना. Sorry, we had to find ECD first. तो ECD हमारे पास कैसा है? दोनों को ऐड करें और 180 से subtract कर लें. What is this angle? 55. Is this clear? Next is ACB. ACB ये वाला है. How do you intend to find this vertical angle ACB? Triangle BEC is an isosceles triangle, right? Triangle BEC is an isosceles triangle. अगर ये 75 है तो C का पूरा एंगल कितना होगा? 75. उसमें से 20 अगर मैं माइनस कर दूंगा तो will I get ACB? I repeat, triangle BE and C is an isosceles triangle. Isosceles triangle के बेस एंगल सेम होते हैं. This is 75, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए था बेटा? 75. उसमें से you know this is 20, so what will be this? ये भी 55. Is this clear?
75 minus 20, which is 55. Now, what about ABF? ABF. This is the angle that okay, 75 plus. दोबारा देखो और 75 plus C. और से देखो which triangle are you looking at? Tell me the focus that you have. सर इस triangle पे मैं focus कर रहा हूँ. Okay, again think about it. ये angle किसके equal होगा? आहिस्ता आहिस्ता step by step सोचो ना. ये angle इस angle के equal होगा. Right or wrong? Reason is this angle, ये जो B वाला, the unknown angle that we need to find, ABF, alternate angles given a parallel lines. We are not assuming parallel lines. Is this clear? Right? Okay. And what will this angle be equal to if I use the properties of circle? ये A पे जो join हो रहे हैं, go back. दोबारा ये lines को पीछे follow करो. ये दो lines निकल कहाँ से रही हैं? एक B से निकल रही है और एक C से निकल रही है. Are there any two lines जो B और C से ही निकल के कहीं और meet कर रही हो circumference पे? Very good. E पे ये वाला भी जो एंगल लूंगा, ये इसका एंगल इन सेम सेगमेंट होगा या नहीं होगा? फॉलो करो. ए पे जो दो लाइंस मीट कर रही हैं, पीछे जाके देखो कहां से निकली थी. एक बी से निकली थी और एक सी से. सेम टू लाइंस कमिंग आउट ऑफ बी एंड सी आल्सो मीट एट ई. ये दोनों, ये और ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट हुए या नहीं हुए? सो दिस एंगल इज 75. ये पूरा एंगल भी 75 है आइसोसेलेस का. कैन यू फाइंड द थर्ड एंगल ई? कितना आ रहा है वाला एंगल? 75 प्लस 75 करो और उसको फिर 180 से माइनस करो. व्हाट इज दिस एंगल? 30. If this is 30, ये भी 30 होगा. What is the reason? Angles in same segment. If this is 30, तो ये भी 30. Reason is alternate angles. Is this clear? So ABF is 30 degrees. How do we find AOC? AOC. Yes, class. Very easy again. Radius और tangent के बीच में एंगल कितना होना चाहिए था टोटल? Tangent at 90. So this complete angle must have been 90. उसमें से अगर मैं 68 माइनस करूंगा तो कैन यू टेल मी दिस एंगल कितना हुआ? This complete angle is 90 by because the radius is the tangent. I'm not assuming it to be a tangent. The question tells me it's a tangent. So what is this angle? ये और ये एंगल दोनों सेम है because it's an isosceles triangle. How? Both of them are radii. So it's an isosceles triangle. If this is 22 तो ये भी 22. दोनों को ऐड करो, 180 से subtract करो. Tell me what you get AOC. It's paper 2. Calculators are allowed. 22 times 2 and then 180 minus 44 is 136. And AEC. AEC. Yes, class. I just told you what special property does this kite have, that the opposite angles are supplementary. O और E अगर मैं ऐड करूंगा तो दोनों ऐड होके कितने बनने चाहिए? 180. I already know O. 180 से 136 minus कर दो, you get AEC. What is AEC?
kite. I'm looking at the kite AOCE. Clear? Now the question says find the three angles of the triangle ABC. Okay, triangle ABC. पहले तो B वाला एंगल निकालना बहुत आसान है. How? Cos. No, half of O भी हो सकता है बिल्कुल. I can either do half of O. ये ऑलरेडी मुझे पता है ये 68 है. एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट की वजह से ये भी 68 होगा. सो एंगल B is 68. ओके, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग एंगल्स? C का एंगल आप मुझे पूरा बता सकते हैं कितना होगा? ये वाला पार्ट 46 था, ये ग्रीन वाला पार्ट वी जस्ट फाउंड आउट 22. 46 प्लस 22 ये भी कितना हो गया? 68. जब ये दोनों आपको मिल गए हैं, कैन यू फाइंड दिस कंप्लीट एंगल A? Add 68 and 68 और 180 सब्ट्रैक्ट कर लो. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल? वेरी गुड, आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसमें AB एंड AC की लेंथ विल बी द सेम. निकाल कर बताओ कितनी आ रहा है एंगल A? Is this clear? Now attempt the remaining questions. फिर next class में हम उसकी queries discuss करेंगे.